Good morning, students. Today we are going to start our chapter 2, Diversity, Prejudice and Discrimination. As we have studied previous chapter number 1, Diversity in India. In that chapter we studied that diversity is very good, found in India, and it is very good. But in this chapter we will read about the different difficulties in the diversity. Diversity means vibhinnataएं. As you all know, diversity exists in India in terms of religion, language and geography. Due to this diversity, some social groups form negative feeling and treated differently from other social groups. This negative opinion are called prejudice, which create tension in the society. About prejudice, we will read further information. Prejudice and stereotype. Now, what is prejudice? What is prejudice? Prejudice means to develop a negative feeling towards anyone or anything without knowing much about them. So what is prejudice? Prejudice means a negative feeling. हम जब किसी के बारे में नेगेटिव फीलिंग सोचते हैं, उसके बारे में गलत सोचते हैं, विदाउट नोइंग मच अबाउट हिम, उसके बारे में बिना ज़्यादा जाने हम एक मेंटालिटी सेट कर लेते हैं. दैट फीलिंग इज़ नोन एज प्रेजुडाइज. उस तरह की फीलिंग को हम कहते हैं प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. अ नेगेटिव प्रेजुडाइज जनरेट फीलिंग ऑफ हेट्रेड. जब हम नेगेटिव प्रेजुडाइज डेवलप करते हैं तो हम हेट्रेड की फीलिंग को डेवलप करते हैं टुवर्ड्स एनी पर्सन और ग्रुप. But positive prejudice can result in favor of person or group. और जब हमारी positive prejudice feeling होती है तो हम किसी के फेवर में हमारी फीलिंग डेवलप होती है. Prejudice feeling emerged out of ignorance. Now stereotype is based on preconvenience ideas. What is stereotype? Stereotype is प्री-कन्वीनियंस आइडिया. पहले से आइडियाज़ जो हैं आर ओपिनियन विच आर बेस्ड ऑन प्री-कन्वीनियंस आइडिया ऑफ ओल्डर जनरेशन. कि जब हम पहले से स्टीरियोटाइप क्या होता है, जब हम पहले से किसी के बारे में कोई हमारी मेंटालिटी डेवलप कर लेते हैं और उसी सोच पर आगे बढ़ते हैं, दैट टाइप ऑफ फीलिंग इज़ नोन एज स्टीरियोटाइप. सब एग्जाम्पल्स of prejudice are given here. One group of people believe that other group of people are inferior because of their skin color. कि एक ग्रुप के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बिकॉज वी आर वाइट इन कलर, हमारा कलर वाइट है तो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो इन्फीरियर हैं, हमसे कम है बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, उनके स्किन कलर की वजह से. अनदर एग्जाम्पल, some people believe themselves better than others because they live in town. कुछ लोग अपने आप को बेहतर मानते हैं, अच्छा मानते हैं because they are living in town. Prejudice about the economic status, क्योंकि वो अपने आप को बहुत rich मानते हैं because they are living in town and better living conditions, so they thought they are very good. They are highly profiled people and other people which are living in the other areas are low level people. Prejudice is harmful because it hurts the feeling of others and create tension in the society. Prejudice harmful है because due to the prejudice feeling tension create in the society. हमारे समाज में tension create होती है. Stereotype. Stereotype, as I told you, stereotype क्या है? Stereotype are the preconvenience ideas about anything. In stereotype, we generalize our opinion which are based on preconceived ideas of older generation. Now let us understand stereotype
with the help of two cases given in the case study box. Here you can see a case study box is given here, and case 1 and case 2. First we'll study about the case 1. Kiran is a girl of class 6th and having problem in maths. She is taking extra classes for maths, but her grades are not improving. But her brother tells her that it's okay because there is a feeling that girls are usually not good at maths. So in this case study we are having a stereotype feeling. हमारे पहले से mentality is there कि girls are not good at maths, कि girls लड़कियां maths में अच्छी नहीं होती हैं as compared to the boys. This is the mentality in our society. So this type of feeling is known as stereotype. Now second case study, Leena is a girl and she belonged to a smaller area compared to Madhu. One day when Leena invited Madhu on her birthday party, Madhu refused to go Leena's house. She thought that her house would be dirty. But after the party, all her friends praised Leena's house and food. Now in this case study box, two girls are here, Leena and Madhu. Leena invites Madhu in her birthday party, but Madhu refuses. Why Madhu refuses? Because she thought that she lives in an area which was very dirty. So she refuses to go in her party. But after the party was over, all her friends praised the Leena's house and the food. So by reading these two examples, we can see that there is a fixed opinion about a particular gender or a group. इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि इनमें एक पर्टिकुलर जेंडर के लेके, गर्ल्स को लेकर, बॉयज़ को लेकर एक पर्टिकुलर माइंड सेट है कि गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथ्स and a particular group of people which are living in that area, they are dirty, they are having low standard. So this type of feeling is a stereotype feeling. Several examples which can see around us. First, girls is expected to play with dolls and to cook food, wash clothes and to clean house, and boy is expected to play with cars and to earn money when they grows up. Now a feeling is there in our society कि basically हमारी feeling क्या है कि girls are plays with toys. Girls को toys के साथ dolls के साथ खेलना है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, house cleaning करनी है. And boys का जो work है वो क्या है, they have to play with cars, they have to earn money when they grow up. So this type of mentality is developed in our society, and this type of feeling is known as stereotype feeling. This is created gender stereotype. अब इसको हम क्या कहते हैं, gender stereotype, difference between the genders, in which we believe that the girls and boys can do some specific वर्क. हमारा मानना है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्क हैं कि ये कुछ काम है जो केवल लड़कियां करेंगी और कुछ काम है जो केवल बॉयज़ करेंगे. बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज़. टुडे वी कैन सी दैट द वुमेन डूइंग जॉब्स एंड सपोर्ट देयर फैमिली एंड मेन also help in household work. But nowadays we are seeing that women are doing such type of work and they are supporting their family, full support करते हैं family को, as well as they are doing the household work. साथ साथ वो घर का काम भी करती हैं. The stereotype feeling may for people belonging to a particular region, religion, race, etc. Stereotype also hurt the emotion of the people. स्टीरियोटाइप जो फीलिंग होती है उससे कई बार लोगों के इमोशंस को भी इफ़ेक्ट करते हैं, हम हर्ट करते हैं कई बार किसी को कुछ बोलकर अकॉर्डिंग टू द रेस, देयर कलर, देयर जेंडर. तो इस तरह से स्टीरियोटाइप फीलिंग हमारे समाज में टेंशन क्रिएट कर सकती है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. इफ़ प्रेजुडिस इज़ अ थॉट, discrimination is an action.
अगर प्रेजुडाइज एक थॉट है तो डिस्क्रिमिनेशन उसका क्या है, एक्शन है. इट मीन्स ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स होता है भेदभाव करना, डिफरेंस करना. ट्रीट द पीपल डिफरेंटली, लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना. डिस्क्रिमिनेशन may lead to putting other people down, not allowing them to participate in activities, not allowing them to live in your neighborhood, etc. Discrimination may take place between girl and boy. The boy child may be given more opportunities of education than a girl child. As you know student, in our society there is a discrimination of girl and boy. हमारे समाज में boy और girl का difference है. As you can see in your surroundings कि boys are having more opportunities than girls. Boys को ज़्यादा chance दिया जाता है as compared to the girls. Discrimination may be because of religion. Discrimination अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. Discrimination may be of religion. People of particular religion may be discriminated because they are different from others. डिस्क्रिमिनेशन धर्म को लेकर भी हो सकता है. कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन. डिस्क्रिमिनेशन में बी बिटवीन रिच एंड पुअर. रिच गेट्स द मैनी एडवांटेजेस. जो अमीर लोग होते हैं उनको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं इन गेटिंग जॉब्स, गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा. एंड ऑल दीज रिजल्ट, इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या होता है? इनइक्वालिटी. Fighting inequality. As we all know, there was discrimination in India on the basis of caste. Since early time, Indian society has been divided the caste line, either above or to below. जैसा कि हम सबको पता है कि इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द कास्ट. People whose work are more valued like Brahmin, Kshatriya, Vaishya were placed at the top of the caste structure, and the people who did menial jobs, carpenter, potters, weavers, blacksmith were placed at the bottom of the caste structures. Now previous time, as you know, the caste system, our society was divided into caste system: Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras. Brahmin, Kshatriya, Vaishya were placed at the top of caste system. उनको ऊंचा माना जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास को. But the Shudras were the fourth class. The Shudras were the people who do the menial jobs. Menial means होता है सेवक, नौकर का काम करने वाले लोग, जैसे weavers हुए, blacksmith हुए, carpenters हुए, potters हुए. They were placed at the bottom in the caste society. उन्हें समाज में नीचा स्थान प्राप्त था. This treated inequality in the society and divided into upper caste and lower caste. The people who belong from upper caste think themselves superior. कि जो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, दे थिंक themselves superior. वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे. And the low caste people were called untouchables. और लो कास्ट पीपल्स को किस नाम से जाना जाता था? अनटचेबल्स, जिन्हें कोई भी टच करना नहीं चाहता था, छुआछूत. The untouchables were treated very badly in our society. They were not allowed to enter in the house of upper caste and temples. कि अनटचेबल्स जो थे, फोर्थ क्लास जो थे, शूद्रास, दे वर वेरी ट्रीटेड वेरी बैडली इन द सोसाइटी. समाज में उनके साथ बहुत बैड ट्रीटमेंट किया जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द अपर कास्ट हाउस एंड इवन इन द टेम्पल्स. दे कुड नॉट टेक वाटर फ्रॉम द सेम वेल एज द अपर कास्ट. उन्हें उन जगहों से, उन कुओं से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था जहाँ से अपर कास्ट के लोग पानी लिया करते थे. Again student, a case study box is, you can see a case study box is there. A case study box is given in which a short story is given about Mahatma Gandhi. As you all know, Gandhiji is also known as father of nation. Gandhiji faced racial discrimination in South Africa, and this incident help him to motivate the fight against discrimination.
Now we will discuss about the incident. One day Gandhiji was traveling in a train in South Africa. A first class seat was booked for him in the train. But in South Africa, black people were not allowed to travel in first class. So some white people entered and they pushed Gandhiji and his luggage out of the train. This incident made him that he will fight for his rights. When Gandhiji returned India, he saw discrimination also present in India. So he decided to fight against it. Mahatma Gandhi and many others worked for the upliftment, the status of the untouchables, and they called them Harijans. Now the Constitution and equality. Constitution means Samvidhan and equality means Samanta. Indian people were fighting for the freedom from British, and this encouraged the people to fight for their rights. Indian people, as you know, previously India was under the control of Britishers. Indians were fighting for the freedom. Indian जो people थे, they were fighting for freedom. वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे. And so the people not only fought against the British but also to establish equality in India. न केवल वो ब्रिटिशर्स से फ्रीडम चाहते थे बल्कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टैब्लिश इक्वालिटी इन इंडिया. वो भारत में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, समानता स्थापित करना चाहते थे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स on 26 January 1950. The constitution framer or maker Dr. B.R. Ambedkar provide equal rights and opportunities to all the people. Indian constitution came to force. Indian constitution कब start किया गया? 26 January 1950. And the constitution maker was Dr. B.R. Ambedkar. He provide equal rights and opportunities to all the people. उन्होंने सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए. Peoples were allowed to follow their religion, their custom and their festival. हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को, अपने कस्टम को, अपने फेस्टिवल्स को फॉलो करने का अधिकार था. Thus India became a secular country where all the religions were equal before the लॉ. और इसीलिए इंडिया क्या बना? एक सेकुलर कंट्री. सेकुलर कंट्री मीन्स अ कंट्री वेयर ऑल द रिलीजन वर ट्रीटेड इक्वली. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन equal opportunities to all the people. To uplift the society, the weaker section, the scheduled castes, scheduled tribes and the other backward classes. कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में equal opportunities are given to the each and every people. सभी लोगों को समान अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं. और ऐसा क्यों किया गया है? तो अपलिफ्ट द सोसाइटी वीकर सेक्शन. समाज का जो वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. पीपल वर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क बट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया. लेकिन इतना सब करने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया. आज भी भारत में इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पाए जाते हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी देन नो प्लेस फॉर प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कम्युनिटीज़, होम, स्कूल्स एंड वर्क प्लेस. अगर हमें एक गुड सोसाइटी क्रिएट करनी है, अच्छा समाज, बेहतर समाज बनाना है, then no place for prejudice, discrimination in our home, school and workplace etc. Then only we are able to create a good nation और world. तभी हम एक अच्छा नेशन, अच्छा राष्ट्र, अच्छा समाज, अच्छी दुनिया बना पाएंगे which is free from prejudice, discrimination and stereotype. Thank you student. I hope all of you understood the chapter. Thank you.